आई थिंक सब कुछ रिमूव निकल रहा है फिर से. सो just a minute. So let me remove everything first, and let me try to draw one more time. So here I am drawing again the x-axis, y and z-axis. So can you see? थोड़ा सा शायद मूव भी हो रहा है ये. Yes, sir. Yes, sir. Yes. Okay, और Yes, किसी Yes, का sir. Yes, sir. Yes, sir. और ट्रॉन ड्रॉ कर रहा है आजू बाजू में. प्लीज आपको भी चांस मिलेगा ड्रॉ करने के लिए, बट अभी के लिए छोड़ दो मुझे प्लीज, बख्श दो मुझे प्लीज. सो by the way, I am also recording whatever you are doing, so please, it is not that much difficult for me to identify who is doing this thing. So please, रिक्वेस्ट करता हूँ कि अभी ये सब रहने दो यार, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं. वैसे भी इतना सारा बड़ी चली है, आप मुझे भी पता है आपको मस्ती करने की बहुत इच्छा हो रही है, बट थोड़ा सा पढ़ लेते हैं. मस्ती भी करेंगे यार, कम ऑन. आपको जब चांस मिलेगा हम मस्ती करेंगे, और सपोज कुछ भी करेंगे मस्ती, डोंट वरी अबाउट इट. बट प्लीज पढ़ने के लिए अभी पढ़ रहे हो तो थोड़ा पढ़ लीजिए, मस्ती अभी मत कीजिए. और लेक्चर में ये ड्राइंग कर रहा हूँ तब मत कीजिए प्लीज. ऑलराइट, थैंक यू. Okay, so what I was trying to say is, for example, if you have a two body system, and एक statement अभी मैंने बताया था, in a laboratory frame a system of two particles would require 6 coordinates to describe the motion. The 3 coordinate to describe the motion of center of mass, and the 3 more coordinate to require the relative motion. So how to justify that thing? So for example, if we have a 3 coordinate system, so I am having two particles, say particle number A and particle number B, suppose, and identify the center of mass. Say center of mass is, say, point number C. All right. So the 6 coordinate, which are those 6 coordinate? The first 3 coordinate is to describe the motion of a center of mass. So suppose ये मेरा center of mass है, just identify what is the position of that center of mass with respect to all 3 axes. So first task ये है आपका, and whatever, so from that you will get the 3 coordinates, and the other 3 coordinates are basically to describe the relative motion, A और B का जो relative motion with respect to C क्या हो रहा है, that will be the other 3 coordinates. Alright, so I think it should be clear to you now. It should be clear to you now, and I am sharing now the PowerPoint, our PPT now. So can you see the PPT now? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Alright, Yes, so sir. PPT Yes, वो sir. थोड़ा जल्दी आपको डिलीवर हो जाता है, वो बहुत जल्दी No, डिलीवर हो sir. जाता है. Can you see the PPT now? Yeah, PPT is visible Yes. in my mobile. I am Yes, also sir. connected Yes, with sir, Yes, it my. is sir. visible. Yes, Alright. sir. Yes, sir, Yes, it So, is visible. so the third point, I hope the third point is clear. What are these 3 coordinates? कैसे 6 coordinate आया? That is easy. But now in center of mass frame, we require only 3 coordinate as the center of mass remain basically itself fixed. So that is the point that I am trying to convey. What is the advantage of studying this in center of mass? So the advantage over center of mass and the laboratory frame, किसका ज़्यादा advantage है? That is what I am trying to say. In center of mass, we require only 3 coordinate, as the center of mass itself is fixed, or else one can say the you are with respect to center of mass only you are measuring the things. Therefore, the discussion of the collision is much more simpler in the case of, or discussion or the calculation to be more specific, is much more simple in the case of center of mass compared with the lab frame. So for example, try to identify the 2-dimensional collision in the laboratory frame of reference. I am having the one picture for that. Let me show you that picture first. Let me show you that picture. Where is that picture? Just a minute. Just a minute. Yes, here is the picture. Yes, can you see the image?
Yes, Yes, sir. sir. Yes, So sir. Yeah. Yes, I sir. hope you can see the image. Yes. Okay, Yes, sir. so in this, what I have tried to identify is I have fixed two particle system, this M1 and M2. My M2 is basically at the origin. Now, what is exactly happening in this case is M2 is stationary at the origin and M1 is heading towards your M2. दैट मीन्स व्हाट कि एक मार्बल, दो मार्बल हैं, एक मार्बल से आपने दूसरे मार्बल के ऊपर आपने कोलिजन करवाया आपने, सो व्हाट विल बी द डायरेक्शन और वेयर दे आर लिविंग, कि आपका M1 और M2 मतलब फर्स्ट मार्बल और सेकंड मार्बल कहाँ से कहाँ जाती है, तो क्या होता है, दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू आइडेंटिफाई. सो व्हाट इज एग्जैक्टली हैपनिंग इज M1 का आपका पोजीशन दिख रहा है आपको, M1 सेकंड पोजीशन आफ्टर कोलिजन दैट यू कैन सी above the x axis, x and y के बीच में है, with angle with respect to the original axis is theta 1, and similarly आपका M2 का जो कौन सी डायरेक्शन में रहा है, that is in terms of से x and y प्राइम डायरेक्शन के बीच में है, वही प्लेन में है, that means with angle से theta 2. So before the collision your v1 sorry velocity of your second particle was 0, and the first particle having some kind of velocity say u1 or anything, suppose यहाँ पर मैं और अगेन डिफाइन थोड़ा सा हो रहा, सो u1 उसकी सो m1 उसकी वेलोसिटी है u1, एंड आफ्टर द कोलिजन उसकी वेलोसिटी चेंज होती है v1 में, and similarly your m2 was initially stationary, so its initial velocity was 0, that means velocity of second particle was 0, that means u2 was 0, and after the collision it makes the angle theta 2 with velocity v2. So what we will try to identify कि क्या उसकी सपोज जो इनिशियल वेलोसिटी सपोज हमें पता है, सो व्हाट विल बी द फाइनल वेलोसिटी. सो जैसे ही हमने अगले लेक्चर में जो बताया था कि फाइनल वेलोसिटी का रिलेशन क्या है, so that is what exactly we need to identify. I hope this picture is clear. So this m1 is deflected at angle say theta 1 and m2 is at theta 2 and xy prime plane. Okay, so the velocity initially of the particle 2 was 0, and after the collision its velocity is actually v2 with angle theta 2. So what we will try to identify is we will try to identify what will be the velocity after the collision, because we know the velocity of before the collision, and we will try to identify what will be the velocity after the collision. So let us move again uh, presentation mode. So yes, so yes, so the two dimensional collision in laboratory frame of reference. So the जो मैंने आपको डायग्राम में बताया था वही का वही अभी रिपीट है, यहाँ पर लिखा है मैंने. The particle of mass m1 moving with velocity u1 collide with a particle of mass m2 initially at rest in laboratory frame of reference. Now let m1 will be deflected or scattered at an angle theta 1 with its initial direction with the velocity v1. Both u1 and v1 lie in the xy plane जैसे डायग्राम में था. Similarly, the velocity v2 of your m2 after the collision will make angle theta 2 with the original direction. So this is a two-dimensional collision. So basically just try to identify what is the momentum before the collision and what is the momentum after the collision. So here we are working with the two dimensions, so definitely you will have a two-dimensional momentum cases. So x component of momentum is basically given by simple this equation m1 v1, but not mv. M here my velocity before the collision was u1, m1 u1, which is equal to m1 after the collision. Right hand side is after the collision and left hand side is basically your before the collision. So after the collision is basically m1 v1 cos theta 1 plus m2 v2 cos theta 2. Similarly for the y component, please mind well, our particle 2 was at rest and the particle 1 was heading towards your second particle, that was we have considered only in x direction, we have not considered the y component.
So your momentum before the collision was completely zero, and the momentum after the collision is basically given by m1 v1 sin theta 1 minus m2 v2 sin theta 2. So yeah, this minus or negative sign is trivial. That means you can easily identify what is that thing. And you also know the conservation law, your kinetic energy before the collision and kinetic energy after the collision. So your kinetic conservation of energy, we are not considering first of all the potential energy for a moment. The kinetic energy conservation we required m1 half or half of m1 u1 square, which is equal to half of m1 v1 square plus half of m2 v2 square. So Sir, ये technically, yes. सर ये y कंपोनेंट ऑफ मोमेंटम में m2 v2 में माइनस क्यों आया? दैट इज सी अल्टीमेटली जो डायग्राम था, डायग्राम सपोज आप रिमाइंड करो थोड़ा सा, तो वो सपोज जो आपका जो थीटा 2 था दैट वाज बेसिकली इन माइनस नेगेटिव वाई डायरेक्शन दैट वी हैव कंसीडर्ड. द फर्स्ट वन दैट वी हैव कंसीडर्ड इन प्लस दैट फर्स्ट कंपोनेंट में था आपका जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में था, और हमारा सेकंड पार्टिकल जो आपका डायरेक्शन हमने कंसीडर की थी दैट वाज बेसिकली इन योर फोर्थ कंपोनेंट. सो दैट इज व्हाई वी हैव अ माइनस साइन एज अ ट्रिवियल थिंग. जस्ट ट्राई टू लुक इनटू इट. एक बार देखना, सपोज नहीं समझ में आया तो मुझे बता देना, मैसेज कर देना. आई विल गिव द एग्जैक्ट प्रूफ ऑफ दैट थिंग. ऑलराइट, ओके is it all right? Okay, thank you. So the conservation of energy, that is equation again, it is known. So the point is, if you know the initial condition, say m1 or m2 का mass, so that is easy to identify. You can easily know what is your velocity of m1, that is your u1. उसकी वेलोसिटी आप इजीली आपको पता है कि भाई कितनी वेलोसिटी से आपने कोलिजन करवाया. इफ यू नो दिस थिंग, you have to determine, you have four unknowns now, v1 v2 theta 1 and theta 2. But the problem is you have three equations and you have four unknowns, so it is not going to be possible. So let us put some more constraint. So the point is we need at least one more quantity to describe the motion. So let us assume that we know the theta 1 also. So yes, for easiness, or one can simply say we have a four unknowns, but we have only three equations, so we have to confine with, or we have to put one more constraint. That means we need to know one more quantity, that means theta 1. So that I hope you people are getting the point that टू बॉडी सिस्टम, सपोज आप लैब फ्रेम के अंदर आप कैलकुलेशन करना चाहते हो, इफ एट ऑल यू वांट टू आइडेंटिफाई द मोमेंटम और आफ्टर द कोलिजन व्हाट इज द वेलोसिटी after the collision of both the particle, and if at all you want to identify at which angle they are scattering, so it is difficult, v1 v2 theta 1 theta 2, because you have only three equations and you have four unknowns. So that is the point that I was trying to convey in your last slide. It is quite difficult, or it is not that much simple or straightforward if at all you want to study the collision process in left frame. All right, that means we need one more constraint, that means your theta 1 one should know. Now still let us try to identify this thing for some special cases. The special cases here that we are assuming that both masses are identical, that means your m1 and m2 is same. So the for special case m1 which is equal to m2, and for equal masses, that means we will have this velocity v1 which is equal to u1 cos theta, and v2 square which is equal to u1 square minus v1 square. That means you just put all the information in your this simple equation, just try to identify what you are getting. So if you put this m1 and m2 to be same, then you can easily identify in your x component your mass will be completely what you can say, they will cancel out from both the side, left hand side and right hand side. And similarly in y component of momentum also, and similar way from in conservation energy conservation equation also, you can easily identify your u1 square equal to v1 square plus v2 square. So that is what exactly I have mentioned in this slide. So your v1 will be equal to u1 cos theta 1, and v2 square equal to u1 square minus v1 square. And then you can also identify from that second equation
you can easily identify your sine theta 2, which is equal to sin v1 by v2 sine theta 1. So by knowing this v1 v2 and theta 1, you can identify जो initially static था, stationary था आपका particle m2 कौन से एंगल पे वो स्टैटर्ड हुआ आफ्टर कोलिजन कहाँ गया वो. Alright, so you can, I think it is clear to you now. These equations are also trivial, you can also easily derive. Okay, so let us study the same process in the case of, say, in your center of mass frame of reference. So consider, so we have a same what you can say, the terminology, more or less they are same. So consider the elastic collision between two particles in the laboratory frame, जो हमने जो लिया था वही, in which the particle 1 of mass m1 was initially moving with velocity v1I and collide elastically with the particle 2 of mass m2, which was initially at rest. So your v2I to be equal to 0. So after the collision, so I have slightly changed the nomenclature, I would say. So after the collision, the particle 1 basically moves with the velocity v1f and particle 2 moves with the velocity v2f. So now we can analyze the simple, we can identify, or we will try to identify what will be the velocity of final particle after the collision, what will be the velocity after the collision of both the particles, say v1 and v2 with velocity v1f and v2f. Okay, so we shall now analyze the collision in the center of mass frame of reference, which is actually boosted from a laboratory frame by the velocity of the center of mass. Now this definition of the center of mass, velocity of center of mass is, I hope it is clear, because that is a part of your 11 science. So I will not go in that detail how to derive this thing. So your V center of mass, which is given by m1 v1 initially, that means I over m1 plus m2. Please note that here you will also have this v2 component, but what we have assumed that the particle 2 of mass m2 was initially at the rest, so you won't have the second part. And in the center of mass, we assume that there is no external force acting in the system, which means that velocity of center of mass remain constant during the interaction. And in center of mass, the momentum of two particle is 0. That means what? Your zero momentum frame. Center of mass is a zero momentum frame. हमने सबसे पहले ही स्लाइड में बताया था वो definition of your center of mass. That means momentum before the collision and momentum after the collision, that actually you can take it as a total momentum, by the way. Before collision and total momentum after collision, they are same and they are identically 0. So 0, which is equal to m1 v1 I plus m2 v2 I, which is equal to m1 v1f and m2 v2f. So from this simple equation, you can identify your v1I, which is equal to minus m2 over m1 v2I, and v1f, which is equal to minus m2 over m1 v2f. Okay, now I have a question, I have a doubt, I will say. हमने बताया था अभी, डिस्कस किया था कि we know the velocity of first particle, still we are identifying the velocity is not that much same. Can you identify why it is so? एकदम सिंपल आंसर है इसका. Sir, repeat the question. सॉरी, Repeat the question. क्वेश्चन मेरा ये है कि मैंने बताया था अभी अगले ही स्लाइड में, मैंने बताया था कि मैं वेलोसिटी, सपोज इतनी वेलोसिटी से मैं उसको कोलाइड कर रहा है, मेरा फर्स्ट पार्टिकल कोलाइड विद द वेलोसिटी हैविंग सम इनिशियल वेलोसिटी कोलाइड विद द सेकंड पार्टिकल व्हिच वाज एट रेस्ट. Still I am identifying the velocity here of first particle v1I. What is the reason? How they are differing? So the point is, जो हम मेजर हमने किया था कि we were trying to collide two marbles on each other with, suppose एक
सेकंड मार्बल है मेरी स्टेशनरी है और फर्स्ट मार्बल मेरे हाथ में, उसके साथ कोलिजन ट्राई कर रहा हूँ, हेड ऑन कोलिजन. आई एम जस्ट ट्राइंग टू विथ आई एम ट्राइंग टू हैव अ हेड ऑन कोलिजन. तो क्या कर रहा हूँ कि मेरी वेलोसिटी जो मेरे पास हाथ में जो मार्बल है उस पर कुछ थ्रो कर रहा हूँ मैं. तो सपोज मैंने थ्रो किया अराउंड से 10 मीटर पर सेकंड, सेंटीमीटर पर सेकंड वेलोसिटी से मैंने उसको थ्रो किया. सो दैट वेलोसिटी दैट यू आर सेइंग कि भाई इतनी वेलोसिटी से मैंने उसके साथ हेड ऑन कोलिजन करवाया. कीप इन माइंड और माइंड वेल दिस वेलोसिटी दैट यू आर टॉकिंग अबाउट इज द वेलोसिटी of that in that laboratory frame, not in center of mass frame. But what in center of mass frame, what will be the velocity? That is what exactly that you can easily identify from here. In lab frame, your velocity of your second particle was 0 and the velocity of first particle is at 10 meter per second, but the velocity in center of mass frame of the first particle will not be exactly same that you have applied. So in see, keep in mind ये ultimately क्या है कि suppose जैसे बताया था कल रेफरेंस फ्रेम के रेफरेंस में मैंने बताया था कि कैसे दो रेफरेंस फ्रेम में सपोज कोई एक ही चीज ऑब्जर्व कर रहे हो और दोनों रेफरेंस फ्रेम में कैसे कैसे डिफरेंस आता है, दैट वी हैव सीन इन योर लास्ट लेक्चर. So the velocity here also, the velocity of your first particle after the collision, initial velocity in center of mass will be given by simply minus m2 over m1 and multiply by v2 of initial velocity. And keep in mind, initial velocity of the second particle was 0. That was in lab frame, laboratory frame, not in center of mass frame. So that is why आपको डाउट शायद हुआ हो, शायद कि ऐसा क्यों हो रहा है कि वेलोसिटी क्यों चेंज हो रही है मेरी. मतलब v2 तो हमने 0 एज्यूम किया था, v1 भाई हमें पता था, बट दिस इज द रीजन दैट वाज द नोन थिंग इन कंसिडरेशन ऑफ ओनली लैबोरेटरी फ्रेम, नॉट इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम. सो कंसेप्ट तो पढ़ा था पर शायद ये यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं हम. सॉरी. See, the point is, what I am trying to convey is that what is the difference in laboratory frame and in center of mass frame. That is what I am trying to convey right now for a moment in this particular slide. हमें भी पता है कि velocity of your velocity of your second particle was stationary and first particle का आपने कुछ velocity से उसके साथ आपने head on collision किया आपने. All right, but the velocity that you are saying that भाई मैंने 10 मीटर पर सेंटीमीटर से उसके साथ head on collision करवाया मैंने, which was initially the second particle was initially at rest. But keep in mind this velocity that you are talking about, that is basically in laboratory frame. But now what we are doing the measurement or we are doing the studying this process in center of mass frame. So what is the difference in your laboratory? What is the difference is that what is the velocity in center of mass frame of a first particle? So and what is the velocity of second particle in center of mass frame? So it will not be the same as compared to your laboratory frame. So your velocity would be in center of mass frame of reference. The velocity of first particle would be given by last equation, and again after the collision क्या difference आता है, that is what exactly I have mentioned here. All right, so सी एक चीज बता जो लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था आपको. सी व्हाट उसके लिए आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा व्हाट डू यू मीन बाय फ्रेम ऑफ रेफरेंस. व्हाट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो बताया था लास्ट लेक्चर में. What is the frame of reference? The frame of reference is which from where you are doing the measurement. अब for example आपके पास एक स्केल जो लास्ट लेक्चर में बताया था मैंने, लेट मी क्या बोलते हैं उसको रिवाइज कर रहा हूँ फिर से मैं, कि मेरे पास एक स्केल है और यू आर डूइंग मेजरमेंट ऑफ योर मोबाइल फोन. सपोज उसकी लेंथ मेजर कर रहे हो, तो सपोज आपने स्केल है कंप्लीट फुल लेंथ वाली स्केल है, फॉर एग्जांपल 15 सेंटीमीटर, तो आपने मेजर किया होता कि भाई सपोज से 10 सेंटीमीटर का मोबाइल है मेरे पास. अब सपोज
मैंने वही स्केल जो है जो फुल लेंथ की थी वो बीच में से टूटी हुई है, फॉर एग्जांपल 2 सेंटीमीटर से वो टूटी हुई है। तो सपोज आपने मेजर किया था एंड यू विल कम टू नो कि भाई इट विल शो द लेंथ ऑफ देयर मोबाइल इज 12 सेंटीमीटर, इट विल शो, बट आपको भी पता है कि 2 सेंटीमीटर से ब्रेक हुई है, तो इसलिए व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू सब्ट्रैक्ट दैट 2 सेंटीमीटर फ्रॉम 12, so that means you will get 10 centimeters. So the point I'm trying to say is that with frame of reference चेंज होती है जैसे जैसे, फॉर एग्जाम्पल जैसे फुल लेंथ वाली थी और ब्रोकन स्केल थी, दोनों में सेम चीज का ऑब्जर्वेशन विल नॉट रिमेन सेम। फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल देता हूं मैं, सपोज मैं अभी पढ़ा रहा हूं, तो सपोज पढ़ा रहा हूं, तो सपोज आप बैठे हो और सपोज आपके फ्रेंड हो, सपोज आप अलग अलग बैठे हो नो डाउट, तो कोई बताएगा कि भाई ये चीज़ समझ में नहीं आई, या तो फिर ये चीज़ बहुत ही पता है और सर बहुत ही ज़्यादा टाइम पास कर रहे हैं, और सपोज जिसको ये डाउट था और सपोज जिसका क्लियर हुआ, देन दैट पर्सन विल से कि नहीं भाई अच्छा हुआ कि समझ आया, पहले नहीं पता था। सो द पॉइंट इज मैंने कन्वे तो सभी को सेम ही किया था, बट द पॉइंट इज सभी आप अलग अलग बैठ के आप उसको ऑब्जर्व किया, तो सभी का ऑब्जर्वेशन डिफरेंट आया। Are you getting my point? So the point is जो जो कहना चाहता हूँ कि सपोज कोई एक फिनोमिना का आप ऑब्जर्व कर रहे हो, तो सपोज वो गारंटी और जरूरी नहीं है कि सपोज वही का वही ऑब्जर्वेशन आपका फ्रेंड भी नोट करे। सो दैट इज व्हाई आई एम ट्राइंग टू से कि जैसे जैसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जैसे आपने मेजर किया तो आपकी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में मेजर किया, सपोज आपके फ्रेंड मेजर कर रहे हैं तो वही उनकी फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो दोनों की फ्रेम ऑफ रेफरेंस यहाँ पर डिफरेंस आएगा। दैट इज व्हाट द मेन पॉइंट कि व्हेन यू चेंज द फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑब्जर्वेशन विल चेंज। एंड वही मैंने बताया कि सपोज दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस को कोरिलेट करना है, देन यू नीड टू हैव अ सम काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन विल बी देयर। सो फॉर एग्जांपल आपका लेबोरेटरी फ्रेम और आपका जो सेंटर ऑफ मास फ्रेम दोनों को कोरिलेट करना है, दैट मीन्स दोनों को सपोज सेंटर ऑफ मास फ्रेम में हमने स्टडी किया, उसको लेबोरेटरी फ्रेम में ट्रांसफॉर्म करना है या कन्वर्ट करना है, देन you need to apply a Galilean transformation. So there is a simple trivial transformation rules are there, but the point is that I'm trying to convey is that when you draw or when you change the frame of reference, your observation will change. It will not be the same one. All right. So I hope it is now clear to you. Okay. So now let us go with the further calculation part. So let us identify the kinetic energy. The kinetic energy we are studying in collision elastic collision. So the kinetic energy will be same before the collision and after the collision. So in this equation, if you put the value of this V1 initially and V2 or V1 final, then you can easily identify your V2. Can you do this simple calculation? I'm giving you 2 or 3 minutes. You have simple this equation, half m1 v1 square initially and half m2 v2 square initially, which is equal to half m1 v1 square final and half m2 v2 square final. That means left hand side is before collision and after right hand side is final velocity of after the collision. And you know the relation of 1 to 2 initial and final. So can you identify this thing? Initial, suppose first particle का initial velocity or second particle की initial velocity. There is a simple relation between both of them. Similarly, final particle का first particle की final velocity and second particle की final velocity is also known. So can you identify what will be? Suppose हमने V1 हमने substitute किया, V1 आई और तो हमें क्या मिला, और V2 सब्स्टिट्यूट किया तो क्या मिला? कैन यू आइडेंटिफाई दिस थिंग? आर यू आल्सो गेटिंग दिस relation that I have received? Can you do this thing? I am giving you 2 or 3 minutes. Can you do it? Hello, please wake up.
Yes, sir. Proceeding. Sir, Yeah, please be quick. Yes. सर आपकी आवाज नहीं। मैं कुछ बोल भी नहीं रहा हूँ अभी मैं। ओह सॉरी। सर इससे पिछली स्लाइड एक बार दिखाएंगे। यस, Yes, sir. yes. What is the answer? Are you getting the same that I have mentioned? Yes, sir. V2I is equals to V2R. Yes, same way. If you solve for V2, you will get the same one. So, what is the meaning of all this thing? So, the point that actually यहाँ पर लिखा है मैंने कि in the center of mass frame of reference, the magnitude of velocity of particle remains unchanged. Magnitude, I'm trying to talk about magnitude. That is, in the center of mass frame of reference, the magnitude of the velocity of the particles remains unchanged in the case of. So, if you study the elastic collision in the center of mass frame of reference, your velocity component जो है, the magnitude will remain same or unchanged before and after the collision. So I hope this point is very much clear to you now. Okay, Sir, so what the last, about the direction? you can see the direction, come on. मैंने जानबूझ के बताया नहीं डायरेक्शन के बारे में. Sir, यस, जानबूझ के बताया नहीं मैंने, ये एक्चुअली एग्जाम में पूछने वाला था मैं. So now I think you can easily think upon it कि what will happen with the direction also. So suppose from I think from in the second lecture that जो डिस्कशन हुआ था कि what is the difference between elastic and inelastic collision. So आपके ही किसी फ्रेंड ने बताया था कि elastic collision almost impossible है. So yes, it is true, but suppose in case if it is happening in the say elastic collision is taking place, so now you can easily identify what will be the constraint or what will have the constraint or what are the constraints that particle will have कि क्या velocity आएगी और क्या उसका what you can say कि suppose ये velocity आएगी और क्या direction रहेगी. तो for example if I give some example to identify कि what will be the इलास्टिक कोलिजन है और इनइलास्टिक कोलिजन है. सो प्रोबेबली आप जो डायग्राम बनाओगे तो उसी के डायग्राम से ही या प्लॉट से ही आपको मेजोरिटी समझ में आ जाएगा कि भाई ये इलास्टिक का एग्जांपल है या इनइलास्टिक का एग्जांपल है. मे बी बिकॉज आपको अभी पता है कि क्या वेलोसिटी में क्या कंस्ट्रेंट रहेगा. सो आई होप दिस पॉइंट्स आर वेरी मच क्लियर टू यू कि डिफरेंस बिटवीन योर इलास्टिक एज वेल एज योर इनइलास्टिक कोलिजन. एंड सपोज इलास्टिक कोलिजन है तो सेंटर ऑफ मास में क्या रहेगा और लेबोरेटरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या रहेगा. सो लेबोरेटरी फ्रेम का थोड़ा सा नॉन ट्रिवियल है, बट इन केस ऑफ से सेंटर ऑफ मास इट इज वेरी मच ट्रिवियल और one can easily identify all this thing.
Is it clear? Okay, the point is why to study the collision प्रोसेस से. आई थिंक ये मैंने फर्स्ट लेक्चर में ही बताया था कि भाई collision process से what are the things that we are going to understand if you study this collision process. So the first point that I have written is to understand the nature of force of interaction. This is done by measuring initial energy and a linear as well as angular momentum of the particles. For example, तो चार्ज पार्टिकल्स हो आपके पास, तो सपोज चार्ज पार्टिकल का आपने इंटरेक्शन स्टडी किया, कोलिजन स्टडी किया. सो हाउ चार्ज पार्टिकल के बीच में कैसे इंटरेक्शन होता है, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन. फॉर एग्जांपल जो इसके अंदर आएगा कूलम्ब लॉ का जो नेचर है दैट यू कैन इजीली आइडेंटिफाई विद द हेल्प ऑफ दिस कोलिजन प्रोसेस. एक और एग्जांपल लिखा है मैंने, द डिफ्लेक्शन ऑफ ए पाथ ऑफ ए कॉमेट पासिंग नियर द सोलर सिस्टम एंड it basically follow the elliptical path of a planet within the solar system help us to understand the nature of that gravitational force. That is also very much clear. The collision between molecule of gas according to the kinetic theory leads to the understanding of interatomic and intermolecular force. Also, the scattering of an alpha particle in the Rutherford scattering, or the scattering of a high energy photon in the case of Compton scattering, the high energy nuclear reaction, the scattering of slow neutron by nuclei, and the emission of alpha and beta particles from radioactive nucleus help us to understand the nature of nuclear forces, the properties of nucleus and atomic structure. So basically ये जो लास्ट पॉइंट है उसके ऊपर मैंने बताया था थोड़ा सा, और अभी थोड़ा सा डिटेल में जाना चाहता हूँ. थोड़ा सा, अभी 2 मिनट है मेरे पास. ये जो न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर जो सपोज पहले ऐसा था कि भाई आपका जो मास है न्यूक्लियस के अंदर कॉन्सेंट्रेट होता है, तो वो पता कहाँ से चला? तो वो स्कैटरिंग से ही पता चला था कि गोल्ड फॉइल थी, उसके ऊपर कोलिजन करवाया, मतलब बॉम्बार्ड किया, अल्फा पार्टिकल बॉम्बार्ड किया. तो जो स्कैटरिंग प्रोसेस हमने वहाँ पर स्टडी की, तो वहीं से पता चला कि मेजॉरिटी और मेजर पार्ट ऑफ योर एटम्स आर, और मेजर मास ऑफ द atoms are basically concentrated in nucleus itself rather than with the electron. So और बहुत सारे एग्जांपल हैं. अल्टीमेटली सपोज what are the basic building blocks of a nature that you can easily identify? Not easily, I will say, it is the most difficult part, but yes, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक सपोज आपको जानना है कि भाई कौन सी चीज किस चीज से बनी है, सपोज वो आइडेंटिफाई करना है, देन यू हैव टू study the collision process. For example आपका मोबाइल किससे बनना है? So what you need to do is you need to break the mobile with some heavy particle. So that means you have to collide your mobile with something so that you will come to know what is exactly inside your mobile phone. Are you getting my point? So this is the way actually collision is extremely important if at all you want to study the basic characteristics and basic nature. I hope it is clear to you now. Okay, so yes, I'm going to share Yes, this yes, presentation after this lecture, after 1 or 2 minutes. I will share in that chat box itself, so आप सभी को मिल जाएगा. And then from next lecture onwards we will go with your rotational dynamics. So maybe वो भी आपने study किया है, so I will not go in much more detail, बट थोड़ा सा ऊपर से जो भी आपने स्टडी किया है वही आपका रिवाइज कर लेंगे हम लोग. ऑलराइट सर. सो यस एक एग्जांपल था, एक डाउट इन द सेंस पूछूं अभी? हाँ बोलो. सर लाइक जैसे हम एटम्स और एटम्स को कोलाइड करवा रहे हैं, उसको दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखना जरूरी है, from the center of mass frame of reference and that other frame of reference. Yes sir. See, yes, बोलो. No, या फिर एक frame of reference, what is more important? See, it is actually, I will say that it is not it is really difficult to identify which frame of reference will give you more information. For example, center of mass frame or suppose lab frame में suppose आप जो बताया collision, so in that case the collisional energy will be different, but in the case of center of mass, the center of mass energy भी different रहेगी actually.
जो आप प्रोसेस जो बता रहे हो आपको एक्चुअली कौन सी इंफॉर्मेशन चाहिए उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सी फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपको लेनी पड़ेगी. दैट इज अ मेन पॉइंट. फॉर एग्जाम्पल, इफ एट ऑल you want to identify कि after collision क्या क्या मिलता है आपको after collision. So in that scenario you should go for the laboratory frame. अब suppose after the collision means after the collision suppose दो particle collide किए, मैंने आपने जो बताया atoms and atoms आपने collision करवाए आपने, तो suppose after collision suppose detector के अंदर क्या detect होता है, so that is basically with respect to the laboratory frame of reference. बट सपोज दो पार्टिकल जैसे कोलिजन होते हैं तो वहां पर कोलिजन के तुरंत बाद क्या होता है, तो उसी के लिए यू मे हैव टू गो विथ द अदर फ्रेम ऑफ रेफरेंस आल्सो. सो बट यस आई विल से कि सपोज मैंने बताया था कि एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम में जाना इट्स नॉट दैट मच डिफिकल्ट. देयर आर ट्रिवियल रिलेशन दैट वन हैज टू फॉलो, बट यस फॉर दैट आल्सो यू नीड टू हैव यू रिक्वायर्ड लॉट ऑफ डिटेल इंफॉर्मेशन आल्सो. So probably ये चीज ना आपको मिल want. Yes. It probably depends upon what information we want to Yes, know. you required. Yes, definitely. It required that much. All right. Thank you, sir. Okay. The Okay. chemistry So, class start हो गई. yeah. That is what I'm trying to say. Okay. So see you. Hello, see you sir. next. Okay. I'm going to share the PPT. We will meet in your next lecture. Okay. Thank you very much. Have a nice day. Have a Thank great you, sir. weekend. Thank you, sir.